Yes, ma'am. Got the notification? Yes, ma'am. Okay, perfect. I'll still record it here. Just in case we need this as well. Okay, so welcome to all of you and also on the YouTube viewers. So yeah, at least we are trying and touching another milestone and trying to make it more comfortable. So now people should not have a complaint that we put in the YouTube video at 9 o'clock or 10 o'clock or anything like that. Okay. So yes, beautiful day, beautiful Sunday, and Shivani, wish you a very, very happy birthday. So Shivani is a beautiful reader who's Thank got a very nice you. voice. Thank you And so my much friend for from your Singapore. Yeah. So great. Wish you a very happy birthday. So I was thank looking for a nice picture of yours, and then I found so many which had you and me also. But I thought that today is your day. I should not have been on the picture. No, it would have been great to put the other picture with you So and then me. you wait, no, there's a Singapore group also. I'm definitely going to dig out something and post in there. So yeah, we go on to day two, the magic rock. So I hope now we are diligently doing all the practices. And for people who've been जो कुछ time से हैं already हमारी group में, I hope आप सब अपने dreams रोज पढ़ रहे हो. वो भी बहुत जरूरी होता है जो हमारा बिफोर योर वेरी आईज वाला प्रैक्टिस है. अगर आपने 3 महीने से ज्यादा मैजिक बुक किया हुआ है, then please read your dreams every day. Believe you me, it makes a phenomenal difference. एंड यू विल सी दैट बहुत जल्दी वो हो जाएगा. और करना क्या है, सिर्फ रीड ही तो करना है. सो धीरे धीरे रीड कर करके उनका सीक्वेंसिंग वायर होने लग जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में. एंड यू विल सी दैट जो टाइम होता है फॉर योर ड्रीम्स टू रियलाइज और आपके आंखों के सामने आने में, वो बहुत कोलैप्स हो जाता है अगर अपने ड्रीम्स रोज पढ़ते हैं. तो जो विशेज हैं, डिजायर्स हैं, वट एवर दे आर. ओके. सो एंड फॉर पीपल हु आर न्यू, ऑफ कोर्स अभी 3 महीने डिलीजेंटली प्रैक्टिसेस करो, उसकी वजह से यू विल सी ह्यूज डिफरेंस हैपनिंग इन लाइफ. So today is the magic rock practice. Magic rock practice is जैसे इसमें इमेज दी हुई है, तो एक छोटा सा पत्थर होता है जो बहुत कॉमन स्टोन है. ठीक है, जो जैसे सड़क के किनारे, बाय द क्रीक, बाय द रिवर जो हमको मिलता है, बाय द सी साइड, इस तरह का स्टोन. एंड इट इज केप्ट ऑन अ साइड टेबल. रात पूरा अंधेरा है रूम में, एंड यू कैन सी अ बेड एंड अ पिलो, विच मीन्स दैट रात में ये मैजिक रॉक आपको बाहर निकाल के काम आएगा. So that is what it is, and there's a huge significance. Magic rock को हम use करते हैं. हम कोई fancy stones use नहीं करते, marble use नहीं करते, पत्थर use करते हैं, the real rock from the nature. So let's just read and study, get to know more about the practice by diligently studying it. Yeah. Yes, Shivani, please start reading. Day 2, the magic rock. Quote, reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, not on your past misfortunes, of which all men have some. Unquote. Charles Dickens, writer. In the beginning of working with these practices, it takes concentrated days in a row to make gratitude a habit. Anything that reminds you to be grateful is helping you turn your life into gold with gratitude. And that's exactly what this magical practice is about. Lee Brower presented the gratitude rock practice in The Secret Film and Book when he told us the story of the father of a dying child who used a gratitude rock to be grateful for his son's health, and his son made a miraculous recovery. Since then, the gratitude rock has been a proven success with many people the world over who have used it for money, healing, and happiness. First, find a rock or a stone. Choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close your fingers around. Choose a rock that is smooth, without sharp edges, not too weighty, and that feels really good in your hand when you hold it. You can find a magic rock from your garden
if you have one, or from a riverbed, creek, ocean, or park. If you don't have easy access to any of these places, then ask your neighbors, family, or friends. You may even have a precious rock or stone already that you can use as your magic rock. When you have found your magic rock, put it by your bedside in a place where you will definitely see it when you go to bed. Clear some space if necessary so that you can easily see your magic rock when you go to bed. If you use an alarm clock, put it next to your alarm clock. Tonight, just before you get into bed to go to sleep, pick up your magic rock, hold it in the palm of one hand, and close your fingers around it. Think back carefully through all the good things that happened during the day and find the best thing that happened that you're grateful for. Then say the magic words, thank you for the best thing that happened. Return the magic rock to its place by your bed. And that's it. Every night for the next 26 days, follow the same magic rock practice. Before you go to sleep, think back through the day and find the best thing that happened that day. While holding your magic rock in your hand, be as grateful as you can be for that thing and say, thank you. Using a rock seems like such a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. When you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things that happened, and in the process of searching and then deciding on the best one, you are actually thinking of many things you're grateful for. You will also be ensuring that you go to sleep and wake up in gratitude each day. The Count Your Blessings and Magic Rock practices will ensure that you begin and end your days in a state of gratitude. In fact, they are so powerful that together they would change your life in a few months. But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices. Because gratitude is magnetic and attracts more things to be grateful for, the concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. When you have a strong magnetic force of gratitude, like magic, you automatically magnetize everything you want and need to you. Magic reminder. Be sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to collect some photographs before you begin. Magic practice number 2, the magic rock. Number 1, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say, thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, find a magic rock and put it by your bedside. Number 3, before going to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and think of the best thing that happened today. Number 5, repeat the magic rock practice every night for the next Man, 26 you skipped days. number 4. You Oh, skipped. sorry. Say the magic words, thank you for the best thing that happened today. Number 5, repeat the magic rock practice every night for the next 26 days. Number 6, read tomorrow's magical practice today. All Thank right. you. Thank you. Thank you, Shmani, so much for the birthday reading. We have lots of birthday readings happening, so which is such a good thing.
So thank you so much for your Thank beautiful voice. you. Everyone, I'm sure, thoroughly enjoys. Thank you so much. Yeah. So it is by Charles Dickens. So Charles Dickens का हम work बहुत पढ़ते आ रहे हैं. I think the school books had Charles Dickens, right? We used to have a separate book altogether written by Charles Dickens. So good to read about him again. That reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, not on your past misfortunes. बार बार हमको इस किताब ने बताया है कि don't dwell in the past, don't dwell in the past. Okay, come back to the present, think about the future. Don't think about the past. The past is already a bygone. Bygones are bygones, and everything is constantly changing. Don't think about the past. So let's just rewire this particular statement again into our lives, that don't think so much and don't get hooked to the past. Everything is always changing. There is only one thing which is constant in the world, is that everything is always changing, right? So create the future that we want to create and write your own script. This is what we want to do. सो इन दैट एंडेवर, जब हम इस रास्ते पे चल रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक में भी पढ़ा हुआ है कि रात का टाइम कितना सिग्निफिकेंट होता है, जस्ट बिफोर यू गो टू बेड, बिकॉज इट इज अ टाइम व्हेन यू आर एक्चुअली प्लांटिंग इन द सीड इनटू द सबकॉन्शियस माइंड. सो सबकॉन्शियस माइंड दो ही टाइम पे स्टिमुलेटेड होता है, एक अर्ली मॉर्निंग जब हम सो के उठते हैं, और एक रात को. इनफैक्ट आई हैव ऑलवेज फेल्ट एंड शेयर्ड विथ यू दैट अर्ली मॉर्निंग में इतना नहीं होता, बिकॉज द मोमेंट वी वेक अप देयर आर सो मेनी थिंग्स वी नीड टू डू, और एकदम से वो फ्लैश आने लग जाते हैं कि अच्छा अभी ये करना है, अच्छा टाइम क्या हो गया, ओ आई हैव गॉट लेट एंड आई हैव टू डू दिस, एंड लाइक बहुत सारी चीजें दिमाग में आने लग जाती हैं. सो सुबह के टाइम से ज्यादा इट इज रात का टाइम, विच इज एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट, जब सबकॉन्शियस माइंड टोटली हमारा सबकॉन्शियस माइंड टेक ओवर कर लेता है. सो दैट इज द टाइम जो लास्ट में जो थॉट्स होते हैं, उसको वो कैसे होते हैं, वो प्रिटी मच हमारी लाइफ को प्री डिटरमिन करता है. सो ये वाले जो थॉट्स है, जो मैजिक रॉक प्रैक्टिस है, ये जो प्रैक्टिस है, इससे हम वायर करते हैं ग्रैटिट्यूड को जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड, इंस्टेड ऑफ सल्किंग एंड स्लीपिंग, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट आज दिन में ये हुआ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. एट टाइम्स हमको नींद ही नहीं आ रही होती है, बिकॉज हम इतने परेशान होते हैं रात को, है ना. समथिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग द डे, वी गेट वेरी अपसेट अबाउट इट, वी स्टार्ट ड्वेलिंग इन दैट, और उसी को सोचते सोचते हम सो जाते हैं. आई थिंक वी स्पेंट ऑल आवर लाइफ डूइंग दैट. हमको पता नहीं था ना तब कि ये होता है. तो जनरली परेशानियां रात को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती हैं, बिकॉज यू आर ऑन योर ओन एंड यू आर अलोन, एंड देन आप बेड पे लेटे हुए होते हो और आप सोच रहे होते हो. कई बार होता है, ऑल दोस पीपल जिनको रात में जल्दी नींद नहीं आती, उन लोगों को पता है कि किसी लिए नींद नहीं आती, दिमाग में बहुत तरह की सोच विचार चल रहे होते हैं. सो अब उस जोन से हमको निकलना है और हमें नई तरह की प्रैक्टिस शुरू करनी है, बिकॉज अब हमको पता है दैट रात में लास्ट थिंग वट एवर यू थिंक is what your life becomes, right? So we are ingraining gratitude into our lives now. उस टाइम पे जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत रिसेप्टिव मोड में होता है, and it can absorb anything that we say. So उसमें हम अच्छी अच्छी चीजें एब्जॉर्ब कराएंगे. हम पूरे दिन भर में we'll pick out those things जो हमको लगी, जिनको हमको थैंक यू बोलने की जरूरत है. इट कुड बी स्मॉल थिंग्स, सो कहते हैं ना, लाइक ऑल माई मेंटर्स हैव टोल्ड मी दैट सेलिब्रेट स्मॉल विंस. जब हम टोनी रॉबिन्स का भी कोर्स कर रहे थे, तो वो भी यही बोलते थे कि जब छोटे छोटे विंस को सेलिब्रेट करते हैं ना, तो बहुत इट पेव्स द वे फॉर बिगर विक्ट्रीज इन लाइफ. So celebrating small wins always paves the way for bigger victories in life. And that's what we need to do. Okay. So celebrate those little things, even if it was a hot cup of coffee that you enjoyed, even if it is that beautiful sun that you got to witness, that you got to see while you were on your way, when you were walking or wherever. और इट जस्ट कुड बी कि एकदम से आपने अपने बालकनीज के डोर खोले और बहुत सुंदर दैट ब्रीज कमिंग ऑन योर फेस. It could be a little thing like you were walking on a road and you saw beautiful flowers there, and that really made you feel so good. So whatever it was, a picture maybe, like a picture that came across, maybe on your laptop or wherever, that you saw, and it was a beautiful picture. Picture, I don't mean motion picture, I mean like a photograph, कोई ऐसी आपको दिखी जो बहुत beautiful थी. Or it could be a movie that you watched, that was really good, very very insightful, आपको बहुत मजा आया वो देख के. तो इस तरह से ये छोटे छोटे स्टार्ट सेलिब्रेटिंग स्मॉल विंस, एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू पेव द वे फॉर बिगर विक्ट्रीज इन लाइफ. और कोई भी छोटी चीज नहीं होती, जब इन छोटी छोटी चीजों को हम बहुत हैप्पी फील करते हैं और इनके लिए जब हम थैंक यू बोलते हैं, तो हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है.
आई मीन कभी ये वाली प्रैक्टिस को अगर हम अच्छे से करेंगे ना, तो हमारी लाइफ बहुत मॉन्यूमेंटल तरीके से शिफ्ट होती है. एज वी seen that there's, if you want a radical shift in your life, you have to live in gratitude all the time. So even if it is that normal dal and rice with some ghee that you had for a meal, okay, it's a very small thing, सब लोग खाना खाते हैं, and you also had your share of dal and rice or whatever, so you had that. उसके लिए भी आप रात में सोने के पहले थैंक यू बोल रहे हो. सो ये वाली प्रैक्टिस रात को सोने के पहले करने की है, राइट बिफोर यू गो टू स्लीप. ओके, राइट बिफोर यू पास आउट, उस टाइम प्रैक्टिस करने की है. So where we hold this magic rock, we are calling it a magic rock. It is a normal patthar, but it will start having magical properties. Dheere dheere, as we go ahead practicing this, that stone that we had picked up by the creek, or by the roadside, from the roadside, that stone starts to get the magical powers. And उसको रोज मुट्ठी में पकड़ के सोने के पहले हम पूरे दिन में रन थ्रू करके छोटी छोटे जो विन्स थे, आई वुड स्टिल कॉल इट विन्स, छोटे छोटे विन इज WIN वाला, छोटे छोटे विन्स को हम सेलिब्रेट करेंगे थैंक यू बोल के, उनको याद कर करके. सो वी विल हैव टू स्क्रैच बीनीथ द सर्फेस, और हमको सोचना पड़ेगा कि क्या छोटी छोटी चीजें सुबह से लेके अभी तक हुई थी, जो बहुत ब्यूटीफुल थी, उनके लिए थैंक यू बोलना. और कई बार वो बहुत, इट जस्ट कुड बी अ स्माइल फ्रॉम अ बेबी दैट यू मस्ट हैव मेट व्हाइल यू वर वॉकिंग नियर योर कॉन्डो और नियर योर हाउस. और इट कुड बी एन ईजी ट्रैफिक दैट यू गॉट. इट कुड बी कोई काम करना था. इट कुड बी लाइक आपको कुछ शॉपिंग करना था और वो बहुत अच्छे से आपको कुछ मिल गया, और उसके लिए आपने लाइक दोज लिटिल काइंड ऑफ थिंग्स. सो इस तरह से. एंड उसमें से फिर पूरी लिस्ट में से आप रात में सोने वाले हो, यू ऑलरेडी इन बेड, द रूम इज डार्क, एंड आपके हाथ में वो स्टोन है, आपने सारी चीजें सोची. अब उसमें से बेस्ट चीज आप चूज करो कि ओके ये वाली बेस्ट थी कि ये वाली बेस्ट थी. ठीक है, नींद आ रही है बट यूर स्टिल डूइंग इट. So this will start rewiring your brain in a very, very different way. और आप उसका रिजल्ट देखोगे जब आपकी जिंदगी रोज बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर होती जाएगी, बिकॉज इसी तरीके से काम होता है. तो इसमें अब ये नहीं होगा दैट वी विल बी थिंकिंग अबाउट ऑल द, उसने ये बोल दिया, उसने ऐसे क्यों बोला, आज मैं उस ड्रेस में इतनी मोटी लग रही थी, अब मैं अपना वेट लॉस कर लूंगी. ऐसी ऐसी चीजें दिमाग में आती है हमेशा सोने के पहले. ठीक है, सो इंस्टेड हम लोग अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं और उसको थैंक यू बोलते हैं. रोज रोज रात को सोने के पहले अपनी छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करेंगे, और उसमें से बेस्ट चीज निकाल के उसके लिए थैंक यू बोलेंगे. थैंक यू हमें हर एक के लिए बोलना होता है, लेकिन फिर एक और प्रैक्टिस है कि उसमें से बेस्ट कौन सा था. कभी कभी दो बेस्ट होते हैं, कभी कभी मैं बोलती हूँ यूनिवर्स, आप यू नीड टू डिसाइड विच वॉज द बेस्ट वन, बिकॉज फॉर मी दीज थ्री थिंग्स आर द बेस्ट. Sometimes I say that these two things were the best. I don't want to rate them. You can rate them. I love both of them. Okay. So this is how you can actually live in play, play around with the universe. It's always fun that way. And इस तरह से जब आप उस मोड में, उस मोमेंटम में आप सोते हो, then obviously you're beautiful, like the next day and the next day and the next day becomes even better and better. बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में जो मूवीज डाउनलोड करते हो, दैट इज व्हाट कम्स एज योर एक्चुअल रियलिटी. है ना, ऑब्वियसली दिस इज द लॉ. जो मूवी डाउनलोड कर रहे हैं वही तो दिखेगी हमको. अगर हम सिलेक्ट कभी भी करेंगे तो वही मूवी दिखेगी जो डाउनलोड किया. तो अब डाउनलोडेड चीजें हमने क्या की है, उसके लिए थैंक यू, उसके लिए थैंक यू, ब्यूटीफुल स्माइल के लिए थैंक यू, इतना अच्छा अमेजिंग शॉपिंग टाइम रहा उसके लिए थैंक यू, इसके लिए थैंक यू, वो भी तो बड़ा अच्छा था, बहुत मजा आया, ड्राइव कितनी स्मूथ थी, उसके लिए थैंक यू, ओ आई हैड दैट से लवली दही बड़ाज समथिंग, उसके लिए थैंक यू, खाना कितना अच्छा था उसके लिए थैंक यू, दैट वाटर टेस्टेड सो गुड टुडे उसके लिए थैंक यू, ब्यूटीफुल सनराइज देखने के लिए थैंक यू, इतना ब्राइट डे देखने के लिए थैंक यू, रेन्स देखने के लिए थैंक यू. दिस इज हाउ इट इज. लाइक छोटी छोटी चीजों को जब हम सेलिब्रेट करने लग जाते हैं, इसका मतलब है वी हैव गॉट रिवायर्ड ऑलरेडी.
अगर हमको ऐसी चीजें याद ही आ रही है ना, तो इनिशियली ये थोड़ा सा मैकेनिकली अगेन करना पड़ता है। इनिशियली आप थोड़ा सा वैसे करोगे कि अच्छा इसमें क्या अच्छा था और व्हाटएवर, बट धीरे धीरे दिस गेट सो स्ट्रांगली, इट बिकम्स अ सेकेंड नेचर टू अस, दैट हम दिन भर में भी कुछ ऐसे करते हैं। जैसे मुझे जैसे कोई ग्रीन सिग्नल भी दिखता है, इफ आई एम ड्राइविंग, आई ऑलवेज से थैंक यू, यू नो, लाइक एनीथिंग फॉर दैट मैटर, अ ब्यूटिफुल क्लीन रोड, आई ऑलवेज से थैंक यू। अगर कोई नजर आता है रोड साफ कर रहा है सुबह सुबह, तो अपने आप उस पर्सन के लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड निकलता है। तो इस तरह से जब ये ग्रैटिट्यूड डीपली वायर्ड हो जाता है हमारे सिस्टम में, सबकॉन्शियस माइंड में, देन आवर लाइफ चेंजेस, बिकॉज वी आर मेकिंग अ डेस्टिनी एवरी डे। दिस इज व्हाट वी नीड, एवरी थॉट दैट वी आर प्लांटिंग, it will give an effect. The law of cause and effect is working all the time. Okay, it is not your astrology chart which is deciding your kismet. It is you yourself. Your thoughts are God, as Neville Goddard says. Neville Goddard and Dr. Joseph Murphy, है ना, जो पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने लिख लिया था, योर थॉट्स एंड फीलिंग्स आर गॉड। व्हाई? बिकॉज वी ऑलवेज बिन कॉलिंग गॉड एज अ क्रिएटर, तो हमको पता है गॉड इज अ क्रिएटर, और तो थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमारे होते हैं वो गॉड होते हैं। सो नेविल गॉडार्ड की सारी बुक सिर्फ इस पे लिखी हुई है, योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, थॉट्स एंड फीलिंग्स, ट्राई टू हार्नेस देम, ट्राई टू कंट्रोल देम, डोंट लेट देम गो, उस डायरेक्शन में मत जाने दो जो आपको अपनी जिंदगी में नहीं देखनी है, उसको अपने कंट्रोल में रखो। ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताओ उन चीजों को सोचने के लिए जो आप जिंदगी में देखना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा लव एंड अप्रिसिएशन में अपना टाइम बिताओ, ग्रैटिट्यूड ढूंढो छोटी छोटी चीजों में से, किन किन चीज के लिए आप थैंक यू बोल सकते हो। तो इस तरह हमारा हार्ड वायरिंग हो जाती है दिमाग में, एंड सबकॉन्शियस माइंड अपने आप ग्रेविटेट करता है उन चीजों को अप्रिशिएट करने के लिए जो हमको पहले दिखती भी नहीं थी। ठीक है, तो दूसरी चीज इसके साथ ये होती है कि हम और ज्यादा माइंडफुल हो जाते हैं। हमको जो पता होता है ना हम ये रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम बहुत माइंडफुल हो जाते हैं उन चीजों को अप्रिशिएट करने के लिए जो हमको बहुत इनसिग्निफिकेंट लगती थी पहले। कभी भी जा रहे थे तो ब्रीज, क्या ब्रीज तो चलेगा ना, आई मीन लाइक द ब्रीज इज गोइंग टू, द विंड इज गोइंग टू ब्लो, द ब्रीज इज गोइंग टू बी देयर, आई मीन इट्स ऑलवेज बिन देयर। लेकिन हमने कब नोटिस किया उसको इस तरह से, दैट वाओ थैंक यू सो मच, हमने इस तरह से इस डेप्थ के साथ, उस पर्सपेक्टिव के साथ कभी नोटिस नहीं किया, that the wind blowing on my face or the sound of the sea waves, you're very intently listening to it and you're loving it. Okay, फिर उसके बाद अगर पेड़ के लीव्स स्वे हो रहे हैं बिकॉज देयर इज अ ब्यूटीफुल ब्रीज, सो वी सी दैट एंड वी अप्रिशिएट इट, इट हैज नथिंग टू डू विद अस, लेकिन हम उस तरह से इंसान बन जाते हैं कि हम ये इन चीजों को भी अप्रिशिएट करने लग जाते हैं। वी फॉल इन लव विद द नेचर, इजंट इट? अगर हमें कोई अच्छी चीज भी दिखती है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। हम पहले देखते भी नहीं थे, हमें पता था कि पार्क है, चिल्ड्रंस पार्क है, वहां पे तो बच्चे खेलेंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन, दे आर ईदर साइक्लिंग ऑन द ट्रैक और दे आर प्लेइंग ऑन द झूलास और वट एवर इट इज। सो वी नेवर रियली like paid any attention earlier, maybe we did but not that mindful। तो इसके साथ हम छोटी छोटी चीजों के साथ, ये प्रैक्टिस जो है मैजिक रॉक प्रैक्टिस, इसके साथ हम बहुत माइंडफुल हो जाते हैं उन चीजों की तरफ अपना ध्यान ले जाने में जो लाइक जो शायद हमको पहले मैटर नहीं करती थी। And this means that we are implanting gratitude into our life, and gratitude is penetrating into the subconscious mind, which is the main aim of doing this practice, ताकि हमारी जिंदगी बहुत beautiful हो जाए। And then racking our brain on finding out the best thing that happened during the day, right? It just could be the most amazing coffee you've had. So this is how we go along in our path of life, in our journey of life, and make every day even more beautiful. So this is what this practice is all about. तो इसीलिए किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने आपका काम, बनता हुआ काम बिगाड़ दिया, ये चीजें हमको मैटर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हर चीज हमको और सक्षम और समर्थ बनाती है। हर चीज, कोई भी चीज अगर नहीं हो रही है, अगर कोई और हेल्प करने वाला था और उसने नहीं की और आपको खुद करनी पड़ रही है, दैट मीन्स यू बिकम मोर केपेबल, है ना। आपकी एबिलिटीज एनहांस होती है उसकी वजह से, क्योंकि अब आप खुद करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज यूनिवर्स चाहता था कि आप खुद करो और सीखो इसको। तो उस तरह से हर चीज को थैंक यू बोल देना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज वो हमेशा हमारे हायर गुड के लिए होती है, जो हमको एज ह्यूमन माइंड उस वक्त नजर नहीं आती है, क्योंकि हम लोग बहुत इमोशन बाउंड रहते हैं, इमोशनल बाउंड रादर नेगेटिव। ठीक है, तो इस वजह से हमको वो नहीं पता लगता है समवन डिडंट डू समथिंग फॉर अस, या आपको किसी को आपके घर आके कुछ डिलीवर करना था और नहीं किया। ठीक है, तो आप बहुत सैड हो जाते हो, या यू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिवली।
डोंट लेट ऑल दीज थिंग्स बॉदर अस. ओके, किसी ने कैसा बिहेव किया, डोंट लेट ऑल दोज थिंग्स बॉदर यू. इफ यू सॉ, मैंने कल ग्रुप पे एक वीडियो डाला था. ओके, सो एक इंस्टाग्राम का वीडियो था वेर दैट फीमेल सेड दैट मेरी मेरी तासीर, मेरे माय बिहेवियर इज वार्मथ, लव, केयर एंड अफेक्शन. आई विल नॉट लेट दैट गेट शेकन. चाहे दुनिया में कोई कैसे भी बिहेव करे, my behavior of love, warmth, care and affection will not shake. I will not give that power to the other person to rule my behavior. आई विल नॉट चेंज माई बिहेवियर फॉर दैट पर्सन. है ना, वो वाला मैंने इंस्टाग्राम का जो एक डाला था, दोबारा देख लेना आफ्टर द सेशन अगर आपने नहीं देखा है तो. एंड एनीवन कैन प्लीज पिक इट अप फ्रॉम हियर एंड पोस्ट इट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो. एंड फॉर एवरीवन watching in middle of the session, I'm again telling you that we are making a gradual transition to telegram group. ये whatsapp group will not be existent after some time. ये बस हम buffer time दे रहे हैं so that everybody can download. So आपको ऐप स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा और दैट बिकम्स आवर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन henceforth. ठीक है, सो प्लीज गो ऑन द टेलीग्राम ग्रुप. व्हाट्सएप ग्रुप में लोग बढ़ते जा रहे हैं और इसमें 1000 के ऊपर लोग नहीं आ सकते, और हम लोगों ने पहले भी डिलीट कर करके फिर करवाया था. सो वीड रादर गो ऑन द टेलीग्राम ग्रुप एंड मेक दैट एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, सो प्लीज डू दैट. या, सो या, अबाउट द Posted on मैजिक और मैजिक. Telegram. एंड द मैजिक रॉक प्रैक्टिस जो होती है, इसमें हम नेचुरल पत्थर लेते हैं क्योंकि पत्थर इज अ साइन ऑफ गॉड. इट इज 5 एलिमेंट्स जो हमने पहले पढ़ा हुआ है और हमने सुना हुआ है, बट आई जस्ट रिपीट इट फॉर न्यू पीपल. हम भगवान का रूप पत्थर को बोलते हैं. पत्थर, द रॉक दैट विच इज अ नेचुरल रॉक, दैट इज मेड अप ऑफ ऑल द 5 एलिमेंट्स. 5 एलिमेंट्स होते हैं धरती, which is earth, water, fire, air and space. ये 5 एलिमेंट्स होते हैं. इन 5 एलिमेंट से वो पत्थर बना होता है, इसलिए हम उसको पत्थर को यूज करते हैं. हम कोई डायमंड या किसी उसको मार्बल ये सब यूज नहीं करते. एनीथिंग विच इज मेड फ्रॉम द स्टोन, हम उसको यूज नहीं करते. हम नेचुरल पत्थर को यूज करते हैं, पहली बात. एंड ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये साइन ऑफ गॉड है, भगवान है, बिकॉज भगवान का नाम ऐसे ही डला हुआ. 5 एलिमेंट्स है. सो भ से भूमि होता है, ग से गगन होता है, दैट स्पेस एलिमेंट. ठीक है, व से वायु होता है विच इज एलिमेंट ऑफ एयर. भगवा अंग की वो आती है एक, ठीक है, दैट इज अग्नि. और न जो होता है भगवान का, न, दैट इज नीर. नीर मीन्स वाटर. ओके, सो 5 एलिमेंट्स ही गॉड होते हैं. जब आप 5 एलिमेंट्स को थैंक यू बोलते हो, देन यू मेक गॉड हैप्पी, बिकॉज आप थैंक यू बोल रहे हो. बिकॉज भगवान से अभी तक सब मांगते ही रहते हैं. वैसे भगवान डजंट माइंड. I mean, God is there to give us the best, right? But sometimes we can take those moments, and instead of just asking for this, asking for that, we can just say, thank you for giving me this. Thank you for giving me that. Thank you for making my life so easy and effortless. Thank you for giving me Rhonda Burns books. Thank you for giving me my phone so that I can listen to these videos. Thank you for giving me that book. Thank you to Dr. Joseph Murphy for writing such amazing books and changing our mindset. So this is what we are doing every day in the night, using that power of God in our fist. फिस्ट में पकड़ने का मतलब होता है कि आप, वी ऑल नो दैट हमारे हाथ में सारे नर्व एंडिंग्स होते हैं, है ना. इसीलिए कहते हैं क्लैप करो, उससे वो स्टिमुलेट होते हैं. जब किसी के पेट में दर्द होता है तो यहाँ पे कहीं पे रब करते हैं, उससे ठीक हो जाता है. फिर फॉर एनीथिंग हेडेक होता है तो आई थिंक वो थंब को प्रेस करते हैं, बिकॉज थंब इज द साइन ऑफ हेड, है ना. तो इस तरह से वी ऑल नो दैट हमारे पाम्स में सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं. सो इसीलिए हम उसको मुट्ठी में पकड़ते हैं, स्टोन को, एंड देन वी क्लोज द फिस्ट. सो एंड एनर्जी जो रेडिएट हो रही है, सो हमारे नर्व्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन के थ्रू नर्व से एनर्जी चलती रहती है और बहुत फास्ट स्पीड से चलती है. ठीक है, सो अब स्टोन में स्टोन हमारी मुट्ठी में है, तो वो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी हमारे सारे नर्व्स में चल रही है. सो एनर्जी लेवल क्वांटम लेवल पे, सेलुलर लेवल पे बहुत डिफरेंट होता है उस टाइम. और उसके बाद वो पत्थर में हम सिर्फ थैंक यू ही थैंक यू थैंक यू सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, और फिर उसके बाद हम बेस्ट चीज चूज कर रहे हैं. सो यू कैन इमेजिन दैट हमारा ऑरा कितना वाइड होता होगा उस टाइम, है ना, बिकॉज इतनी पावरफुल एनर्जी होती है ग्रैटिट्यूड की.
सो वो करके एंड देन वी आर स्लीपिंग इन दैट एनर्जी. सो यू कैन इमेजिन दैट सबकॉन्शियस माइंड पे कितना मॉन्यूमेंटल इफेक्ट होता होगा ये वाली प्रैक्टिस करने से, साइंटिफिकली ऑल्सो. एंड देन you're waking up and you're doing your count your blessings, है ना. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दीज प्रैक्टिसेस, दैट धीरे धीरे परमानेंटली हमारा ब्रेन रिवायर उस डायरेक्शन में हो जाता है दैट हम छोटी छोटी चीजों में लाइक वी लुक फॉर जॉयज एंड सेलिब्रेशंस एंड लिटिल थिंग्स. उसी से तो बड़ी चीजें आती हैं. सो दिस इज व्हाट इज अबाउट दिस प्रैक्टिस. एंड कंटिन्यू. अगर आपका रॉक हो गया है तो प्लीज दूसरा इमीडिएटली ढूंढ लीजिए. ठीक है. इसमें ली ब्रावर का लिखा हुआ है दैट हमने सीक्रेट मूवी में देखा था. अगर आपने सीक्रेट मूवी नहीं देखी है तो एज अ होमवर्क आप आज देख लेना उसको. ठीक है. सो इट इज जस्ट 1 hour 20 minutes. यूट्यूब पे भी है एंड इट्स देयर ऑन द नेटफ्लिक्स ऑल्सो. बट नेटफ्लिक्स पे इतनी क्रिसमस मूवीज अभी आई हैं, सो आई एम नॉट श्योर उन्होंने वो हटा ली है कि नहीं. बट सीक्रेट मूवी एक बार देख लेना. इट इज इन द मूवी फॉर्म ओनली. ओके. सो बुक अगर पढ़िए नहीं पढ़िए, वैसे भी पहले सीक्रेट मूवी बनी थी, उसके बाद बुक लिखी हुई थी, तो मूवी में बहुत सिग्निफिकेंस है. डेफिनेटली बहुत कुछ फंडामेंटल्स पता लगेंगे व्हेन यू वॉच द सीक्रेट मूवी. सो यू कैन वॉच दैट. उसमें आपको वो मैजिक रॉक वाला नजर आ जाएगा दैट किस तरह वो आदमी, उसका बेटा टर्मिनली इल था. डॉक्टर ने बोला कि घर ले जाओ, मुश्किल ही है उसका ठीक होना. सो दिस गाय ही गोज बाय द क्रीक. ही वॉज वेरी वेरी लो बिकॉज ही डिडंट वांट टू लूज हिज सन. एंड सो ही वेंट बाय द क्रीक. उसने एक पत्थर उठाया और उसने कहा थैंक यू फॉर 100% रिकवरी ऑफ माई सन. ओके. और उस दिन के बाद से उनका बेटा ठीक होने लगा. सो उसके बाद से ग्रैटिट्यूड रॉक आपको अमेजोन पे भी मिलेगा. आई मीन द मोमेंट यू टाइप ग्रैटिट्यूड रॉक, इतने सारे वेबसाइट्स खुलने लग जाते हैं बिकॉज दे आर सेलिंग दैट स्टोन. बट इट इज नथिंग बट वी गिव द पावर टू दैट स्टोन. स्टोन पावर के साथ कभी भी नहीं आता. ठीक है. सो वो आपके स्टोन अगर आप बहुत टाइम से यूज करते हो तो उसमें ऑलरेडी वो पावर है. अगर आप लोगों को स्टोन चाहिए तो आप दिल्ली वाले तो जो मुझसे मिलेंगे मुझसे ले सकते हैं, बिकॉज मैं बैंकॉक के गोल्डन बुद्धा के पैरों से बहुत सारे स्टोन्स लेके आई थी बोरो करके. तो वो सब मेरे पास है. सो आई कैन गिव देम टू यू. दे प्रीटी मैनी. दैट इज हाउ इट इज. एंड ये प्रैक्टिस करने से आप देखना दैट डिलीजेंटली अगर 21 days भी आपने प्रैक्टिस की है, यू विल, इसमें लिखा हुआ है ना, दैट यू ऑटोमेटिकली मैग्नेटाइज एवरीथिंग यू वांट एंड नीड टू यू. बिकॉज आपको वो मैग्नेटिक पावर्स हमारे अंदर आ जाती हैं प्रैक्टिस करते करते, दैट आप जो सोचोगे वो हो जाएगा, जो सोचोगे वो हो जाएगा. दिस इज हु वी बिकम. मतलब जैसे हमने पढ़ा था ना डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब में, आप 4th dimension में रहने की आपको आदत पड़ जाती है. यू बिकम दैट पर्सन हु इज ऑलवेज इन द 4th dimension. सो that means that the moment you say something, it appears. That means you are in the higher frequency, higher vibration. So that is who we become. और ये मैजिक रिमाइंडर दिया हुआ है फॉर द एक्सरसाइज टुमारो, फॉर द चैप्टर टुमारो विच इज कॉल्ड मैजिकल रिलेशनशिप्स. सो इसमें हमको 3 लोग ऐसे चूज करने हैं जो हमारे नियर एंड डियर वंस हैं. उनसे रिलेशनशिप को, जिनसे हम रिलेशनशिप को अमेजिंग करना चाहते हैं. ऑलरेडी वो अच्छे हैं, रिलेशनशिप ठीक ठाक चल रहे हैं, एंड दे आर योर नियर एंड डियर वंस. दे आर नॉट पीपल जिनके साथ टूटा हुआ रिश्ता है. टूटे हुए रिश्ते वाले लोग अभी मत करना, वो बाद में आएगा चैप्टर नंबर 16 में. ठीक है. सो टूटे हुए रिश्ते नहीं, ब्रोकन रिलेशनशिप्स नहीं करने. करंट में जो अच्छे रिलेशनशिप है, इट कुड बी योर बॉस, योर बेस्ट फ्रेंड, योर स्पाउस, your children, your grandparents, your mom and dad, your neighbors, who's your cousins. So कोई भी हो सकता है, near and dear ones. ऐसे 3 लोगों के फोटो, डिजिटल और हार्ड कॉपी, या तो फोन की गैलरी में या फिर हार्ड कॉपी, ये हमको इकट्ठा करके रखने हैं. प्रैक्टिस ये कल करेंगे. Yeah. So the practices are repeat step. मतलब सबसे पहले count my blessings. रोज सुबह अलग अलग 10 चीज के लिए हम थैंक यू बोलेंगे. लिख के हमको करना है ये वाला count my blessings वाली प्रैक्टिस. अच्छे से डेट लिखो, डे लिखो, और फिर ये लिखो टुडे this day is the best day of my life. ठीक है. उसके बाद point number 1, I'm so happy and grateful, या with all my heart I'm grateful. जो आपको लिखना है वो लिख के किस चीज के लिए आप grateful हो and why.
Okay, like I'm very, very grateful to my water supply system that gives me a very safe drinking water, which also helps me to cook and clean and quench my thirst. Number two, I'm so happy and grateful to my domestic helpers because they make my work so easy and gives me such nice, amazing, nourishing food and takes care of the house so well. Number three, so try and find out new. I'm so happy and grateful to my phone charger with which I charge my phone, which I use throughout the day for multiple things. So this is how you have to say thank you to 10 different things every day. और फिर उसको रीरीड करके 3 बार थैंक यू भी बोलना है ताकि वो हार्ड वायर हो जाए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में. दिस इज द प्रैक्टिस जो हम रोज सुबह करते हैं. 10 ब्लेसिंग के साथ ही हमारे दिन की शुरुआत होती है या शुरुआत होनी चाहिए. ठीक है. एंड देन यूल सी द डिफरेंस. एंड देन फाइंड अ मैजिक रॉक एंड पुट इट बाय योर बेड साइड. अब उसको ऐसी जगह पे रखो जहां वो एक्सेसिबल है. अदरवाइज अगर लाइट बंद हो गई और रात को नींद आ रही होती है, सब लोग लेजी जोन में होते हैं रात को बिकॉज वी आर सो टायर्ड फ्रॉम द होल डे. सो कीप इट एट अ प्लेस विच इज वेरी वेरी एक्सेसिबल. और फिर उसको ताकि आपको उठना ना पड़े, आप पिलो पे आपका हेड है एंड यू कैन जस्ट एक्सटेंड योर हैंड एंड गेट योर स्टोन. ऐसी जगह पे होना चाहिए. कीप इट अंडर द मैट्रेस, अंडर द पिलो, बेड साइड टेबल एक्सेट्रा, कहीं पे ऐसा. एंड उसके बाद हाथ में मुट्ठी में पकड़ के थिंक थ्रू ऑल द गुड थिंग्स दैट हैपन ड्यूरिंग द डे. Find out more and more and more and more. That is how we need to do, and find out the best thing and say thank you for it and go to sleep. And this we have to repeat every day of our life now. जितने भी हमारे इस धरती पे remaining years हैं, count my blessings और magic rock practice हम लगातार करते रहेंगे. ठीक है. और read tomorrow's magical practice today तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 3 लोग जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं उनकी डिजिटल फोटो आप बेशक इंस्टाग्राम से उनका स्क्रीनशॉट लेके, या अगर उनकी फोटो वहां पर है, या अगर आपकी गैलरी में नहीं है बट आपकी फ्रेंड है सपोज, तो आपके फोन गैलरी में नहीं है उनकी फोटो, तो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक से उनका फोटो लेके आप अपनी गैलरी में डाल लेना, फोन की गैलरी में. या हार्ड कॉपी है तो नथिंग लाइक इट. And you can be part of that picture. You can be a part of that picture. It should not be a group picture. That's very very clear. मतलब अगर सपोज एक किसी ए पर्टिकुलर पर्सन का, सपोज किसी का नाम अंजलि है, आपको उनके साथ अपना रिलेशनशिप अमेजिंग करना है, तो अंजलि और आप हो सकते हो साथ में, बट अंजलि, उसका हस्बैंड और उसके बच्चे नहीं साथ हो सकते. ठीक है. इट हैज टू बी ईदर दैट पर्सन और यू इन दैट पिक्चर. दैट्स इट. सो फेसबुक इंस्टा से अगर आप ले रहे हो तो आप जूम कर लेना अंजलि को और फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, बिकॉज हमें बाकी के लोग नहीं चाहिए होते उस पिक्चर में. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो द रूल ऑफ द गेम. Yeah. So this is all we have for this chapter. And now we go to Dr. Joseph Murphy's Telepsychics, the other book that we do every day. Just we are just winding up the chapter and we'll start another chapter, then chapter number 4, after this. So we are just summarizing जो हमने chapter 3 में points पढ़े थे, जिसमें telepsychics को use करके किस तरह से लोगों ने, like they got some miracles happening they made some miracles happen in their life. It was deliberately, they understood the power of the telepsychic. उन्होंने चीजें ढूंढी, उन्होंने एग्जाम दिया, उन्होंने कार उनको मिल गई, गिफ्ट हो गई, मतलब इस तरह की चीजें हुई टेलीसाइकिक्स को यूज करके. सो इट्स अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस. आई ऑल्सो यूज टेलीसाइकिक yesterday. I'm going to share my experience with you. Yes, Mr. Sai Prasad Rao from Yeah, Bangalore, please read for yeah. us. Good morning, everyone. Good morning. Points to remember. 1. You will always receive intuition from your subconscious based on the subject to which you are attentive. For example, if you give attention to the study of a particular stock or stocks, you may receive an inner prompting, a hunch or predominant feeling to purchase a certain stock. Or you may, as one man did, see in your dream the name of the stock and the future height of the stock. Your subconscious dramatizes the answer in ways you do not know. You must be on the alert, on the qui vive, so to speak, to take advantage of the answer. If you are looking, point 2,
If you are looking for lost or mislaid items, turn your request over to your subconscious mind, claiming that the supreme intelligence in your subconscious knows the answer and will reveal it to you. Trust your deeper mind, which knows all and sees all. In one instance, a girl reported that a father appeared to her in a dream and told her to look in a certain page of the family Bible. It was there she found all the papers she needed to claim her property. The ways of your subconscious are beyond finding out. Yeah. So in point number one, we had heard, read that experience detail में कि वो जो person था वो stock exchange में invest करता था, तो वो he would ask his subconscious mind in advance that कौन से वाले shares मुझे खरीदने चाहिए, कौन से stock बढ़ने हैं, कौन से stocks कम होने हैं, वो पहले ही पूछ लेता था, and then he would put his money in those stocks only. So how amazing this is. And second वाला था that this female जो एक secretary की तरह काम करती थी office में, इसको याद था कि जब वो 8 साल की थी तो उसके डैड ने उसको कुछ ऐसा बताया था कि उसके नाम से हवाई में 3 प्रॉपर्टीज 3 लैंड पीस ऑफ लैंड खरीदे थे उसके डैड ने, और वो 3 पीस ऑफ लैंड उन्होंने कहा था क्योंकि शी वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ अ पेरेंट्स, मदर की तब डेथ हो चुकी थी, तो उन्होंने इस लड़की को बताया था कि ये तीनों पीस ऑफ लैंड ये तुम्हारे नाम से ही हैं, तुम्हारे नाम से खरीदे गए। But then when she grew up and when father was no more and she was working as a secretary, obviously she needed money or whatever. And then she remembered कि मेरे dad ने मुझे बताया था कि उन्होंने 3 pieces of land मेरे लिए खरीदे हैं, so what to do about it? And then she kind of, asked her subconscious mind just before going to sleep that please answer, please reveal to me where are the deeds kept. और उसके dad after 2-3 weeks, okay, ऐसा नहीं है कि एकदम से दिमाग में आ जाता है, आफ्टर अ वाइल, आफ्टर अ फ्यू वीक्स, 14-15 दिन के बाद उसके दिमाग में, मतलब उसके ड्रीम में उसके डैड आए और उन्होंने उसको बताया कि बाइबल का पेज नंबर 140 खोलो, तो फैमिली बाइबल का। सो बिकॉज ये लोग क्रिश्चियंस थे तो बहुत सारी बाइबल होंगी सबकी, तो फैमिली बाइबल इज ऑलवेज द मेन वन। तो उसने उस बाइबल को खोला तो उसमें बहुत सारे पेपर्स पड़े हुए थे, अलग अलग पेपर्स रखे हुए थे जो उसकी ग्रैंड मॉम यूज करती थी ये वाली बाइबल। एंड पेज नंबर 150 पे वो डेट थी जो हवाई में 3 पीस ऑफ लैंड थे, एंड देन शी गॉट दैट। सो इस तरह दिस इज हाउ लाइक शी यूज द टेलीसाइकिक पावर टू find what she wanted to, that was lost, that she didn't know of. Yeah. Within point three, within your subconscious are the faculties of clairvoyance, clairaudience, and other supernormal faculties. This is coextensive with all wisdom and power. Within your subconscious are all the powers of the infinite being, which can fetch wisdom from afar, pick the brain of the other, or read the contents of a closed safe. Turn your request over to it with faith and confidence and expect an answer. As sure as the sun rises in the morning, so will there be a resurrection of your desire. Point 4, your mind and spirit. You are immortal. God is spirit, and that spirit is the life principle within you, the reality of you. Spirit was never born and will never die. Your journey is ever onward, upward, and Godward. There is no end to the glory, which is man. Never in all eternity could you exhaust the wonders and glories of the infinite. Yeah, 1 second. So इसमें पॉइंट नंबर 3 में बताया हुआ है कि कभी भी आपको लाइफ में किसी भी तरह की डिफिकल्टी है, कभी भी कुछ पूछना है, कभी भी कुछ ऑर्डर देना है, यूनिवर्स लव्स कमांड्स, ओके, कुछ भी बोलना है, यू कैन यूज द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड विच नोज ऑल। Okay, so it knows all, it can see beyond and beyond. We can't, conscious mind से नहीं पता लगता है कुछ। सबकॉन्शियस माइंड इज कनेक्टेड टू द सुपर कॉन्शियस। आत्मा परमात्मा होती है, आत्मा परमात्मा से हमेशा मिल के काम करती है और वो आत्मा हमारे अंदर है। तो हम कभी भी कोई भी हमें चीज चाहिए, देखनी है, कुछ कमांड देना है, कुछ बात करनी है, अ लिटिल टेट अ टेट, इट जस्ट कुड बी अ लिटिल कॉन्वर्सेशन, do it with the subconscious mind and use that infinite intelligence to start working for you. Okay, that is what it is. और नंबर 4 में बताया हुआ है कि
यू आर माइंड एंड स्पिरिट, मतलब हमारा सोल तो इमॉर्टल होता है ना, वो हर जन्म में हम अलग अलग क्लोथ्स पहन के आ जाते हैं। सो पता नहीं पिछले जन्म में आई वाज इन विच फॉर्म, दिस जन्म आई एम हियर इन इंडिया। सो इस तरह ऑल ऑफ अस हैव गॉट अ जर्नी, so that soul has seen so many lifetimes from the past, isn't it? It is seeing the present, it is one that knows all. So it says that never in all eternity could you exhaust the wonders and glories of the infinite. Itna wonderful hota hai, and wonders in terms of you'll be surprised to know how much it can do for us. But we don't, हम परेशान फिर भी होते हैं, है ना? लेकिन अब नहीं होंगे। हाँ जी। Point 5. Loved ones on this plane communicate telepathically with each other. It would be foolish to say that the same loved ones who go to the next dimension of life, which is all around us and interpenetrates this plane, could not communicate with us. The same spirit and mind are in them that are in you as well. There is no separation in the one mind. I believe definitely there are many instances where you receive definite, concrete messages from loved ones in the next dimension of life. There is no death. It is foolish to talk about messages from the dead. All those who ever lived are living now. Even a million or billion years from now, you will also be alive, revealing more and more of the qualities, attributes, and wonders of the infinite. Point 6. It is well known in academic and scientific circles that man can think, see, feel, hear, and travel independent of his physical being. Astral travel, or that which is called extrasensory travel, has been known for ages. Many have had out of the body experiences unconsciously. Others have experimented in astral travel by concentrating on visiting a friend or sick relative. They found themselves by the bedside, possessing visual, auditory, and tactile capabilities. They are not ghosts or apparitions. They merely have clothed themselves with a subtle body which is rarefied and attenuated, capable of passing through closed doors and transcending time and space. Remember, you are a mental and spiritual being. Someday, you will use all these inner faculties and powers completely independent of your present three-dimensional body. Yeah, so here it mentions in point number 5 and point number 6 that हम as spirits actually मतलब सिर्फ बॉडी से बाउंड नहीं है, हमारा सोल अभी भी जब हम सोते हैं इधर उधर जाता है। इनफैक्ट वी ऑल्सो हैव द पावर, कई बार होता है ना दैट हम बैठे हुए होते हैं तो एकदम से किसी की आवाज हमारे कानों में पड़ती है। यू नेवर नो, कभी आप मेरी आवाज आपके कान में एकदम से सुनाई पड़े, हाय गुड मॉर्निंग इस तरह करके, बिकॉज यू लिसन टू मी सो मच एवरी मॉर्निंग वी आर मीटिंग अप एंड मॉर्निंग इज अ टाइम, ब्रह्म मुहूर्त में हम मिलते हैं रोज। तो हो सकता है मेरी भी आवाज आपके कान में आए, या मैंने कुछ कहा है वो चीज आपको अपने कान में सुनाई पड़े, यू नो दैट आई हैड शेयर्ड दिस अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, तो आपको एकदम से मेरी आवाज कान में आएगी। सो इस तरह से कुछ भी हो सकता है इन द 4 and 5 डायमेंशनल वर्ल्ड, बिकॉज ऑल ऑफ अस बेस लाइन में हम सब स्पिरिट्स हैं, और हमारा स्पिरिट्स इज व्हाट इज गाइडिंग अस, गवर्निंग अस, एंड इट हैज इन्फिनिट पावर्स। ओके, सो इस तरह से बहुत लोगों के इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं कि मुझे एकदम से दिखा कि कोई आया था, या मुझे एकदम से दिखा दैट दिस पर्सन वाज टेलिंग मी दिस। बट ये तभी ये सब तभी होगा जब हम साइलेंस में थोड़ा रहते हैं। मैंने वो किताब दी थी ना साइलेंस वाली, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप दोबारा पढ़ लेना, मे बी समवन कैन रीपोस्ट इट ऑन बोथ द ग्रुप्स टेलीग्राम एंड हियर। Listen to that book very very intently and carefully. It was just a 40-minute book. उसमें भी अगर आप playback speed 1.25 पे करके सुनते हो तो वो और भी जल्दी खत्म हो जाएगी, so you'll not have to shell out, but you really need to understand the power of silence. So all of us today, let's go for a walk and listen to that book again. कोई भी किताब एक बार में समझ में नहीं आती है, उसको बार बार, अभी हम मैजिक बुक 4 साल से कर रहे हैं तब भी अभी भी हमें समझ में, मतलब 2020 से शुरू की थी, 24 आ गया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट मंथ मुझे तो 4 साल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे मैजिक बुक करते हुए। सो एवरी, वो सिर्फ 1 महीने की किताब है, सो एवरी मंथ हैव डन इट फॉर 4 years। अभी भी उसकी कुछ बातें अभी भी समझ में, अभी भी डिकोड हो रही हैं।
So that is how it is. So वो साइलेंस वाली बुक अगर आपने फर्स्ट टाइम पढ़ी है, पहले टाइम में बस लुक एंड फील पता लगती है बुक की, सेकेंड टाइम उसमें से पॉइंट्स हम एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसलिए आई नेवर रीड द बुक ओनली वंस. आई ऑलवेज, अभी मैं आस्क एंड इट इज गिवन पढ़ रही हूँ, पता नहीं हाउ मेनी टाइम्स आई हैव रेड इट बिफोर, आई एम अगेन रीडिंग इट, बिकॉज अभी भी एक नए पर्सपेक्टिव के साथ. नाउ ऑल्सो आई अंडरलाइन, जबकि मैंने पहले से बहुत सारा उसमें अंडरलाइन किया हुआ है. सो नाउ ऑल्सो आई एम डूइंग इट, सो धीरे धीरे समझ में. तो अब इसकी प्री रिक्विजिट है दैट यू हैव टू स्टे इन साइलेंस. थोड़ा कम बोलो, थोड़ा सा spend time with yourself. When you go for a walk alone also. Okay, that's also very important. Or you can just sit in silence and kind of meditate. Okay, so you don't have to get that guided meditation. Just do on your own. Silence just means that you're sitting and you are in that mode when you're receiving. Okay, at least get into that mode when you're receiving, because we are always thinking and doing something. So चुपचाप बैठ जाओ, बस अपनी सांसें अंदर लो and inhale and exhale, that's about it. और ये करने में कोई rocket science नहीं है, बट ये 5 मिनट करने की वजह से you will start seeing the difference in your external world, and you will receive guidances, hunches, things coming into your ear and telling you about something. And this is how beautiful it is. परेशान होने से कोई फायदा नहीं है. Okay, so this is how it actually works. Yes, point number 7. Point 7. A bookie who concentrates and focuses attention on horses in a certain race prior to sleep, asking his subconscious for winners, approaches his subconscious with full recognition of its powers, plus faith and confidence and expectancy, and invariably receives answers. There are many people in England who have foreseen the winner of the English Derby every year and consequently made a small fortune. I knew a Dr. Green whose hobby was horse racing and who made £250,000 English due to prevision, seeing the result of the race for 6 successive years in a row. When you say, I don't dream, or I can't remember my dreams, the moment you awaken in the morning, say to yourself quietly, I remember. And the whole structure of the dream will come clearly into your conscious reasoning mind. Yeah. So point number 7 said that, मतलब जो this guy was a bookie, but there are so many people जो horses पे पैसा लगाते हैं on the horse race. So वो पहले ही अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछ लेते हैं कि कौन सा हॉर्स फर्स्ट आने वाला है, कौन से हॉर्स पे हमको पैसे लगाने हैं. और इस तरह उन्होंने £1,000,000 कमा लिए लोगों ने. तो जिस बुकी का एक्सपीरियंस था इन द प्राइम टेक्स्ट, इस बुक, इस वाले चैप्टर में, तो उसने इतना पैसा, बिकॉज वो हमेशा पूछ लेता था, कभी पूछता था कि जो फर्स्ट कौन सा वाला हॉर्स आने वाला है, थर्ड कौन सा हॉर्स आने वाला है, उसको पता लग जाता था, एंड ही वुड पुट हिज मनी ऑन दोस हॉर्सेस. I mean, how cool is it, right? I mean, so they became rich just putting money on the right horses जो win करने वाले थे. So इसमें ये भी है कि कभी कभी सपोज आपने कोई क्वेश्चन पूछा सबकॉन्शियस माइंड से और आपको उसका जवाब नहीं मिला, यू डिडंट गेट द आंसर. सो कई बार होता है ना, ड्रीम्स में आया था कुछ, अब याद आता है मैंने ड्रीम देखी थी बट मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो क्या थी. सो सुबह उठते ही सबसे पहले यू से I remember, and keep repeating it. Your subconscious is listening and it will deliver that to us. The moment you say I remember, you will remember the whole sequence और आपको याद आ जाएगा exactly the way it was. Yeah. Point 9. Yep. Luther Burbank didn't bother telephoning or telegraphing his sister when he wished her to accompany him on a visit to their sick mother. Instead, he sent her a telepathic message, which she invariably received and complied with. Dr. Phineas Parkhurst Quimbley of Belfast, Maine, said in 1847, I know that I can condense my identity and appear at a distance. He did this with several patients and ministered to them in his astral or fourth dimensional body, which we all possess this very moment. Quimby demonstrated that we are transcendental beings, not governed by factors of time, space, or matter.
सो पॉइंट नंबर 9 में लूथर बर्बैंक, जो बहुत अपने टाइम के फेमस बॉटनिस्ट थे, उन्होंने खूब प्लांट ब्रीडिंग एंड एग्रीकल्चर साइंस में डेवलपमेंट एंड ग्रोथ करी थी। उनके बारे में लोग अभी भी पढ़ते हैं जो एग्रीकल्चर साइंस पढ़ते हैं। सो आई एम फ्रॉम द फूड इंडस्ट्री, सो हम लोग बहुत इनके बारे में पढ़ते हैं। सो लूथर बर्बैंक जो थे वो, जैसे हम टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं ना कि कैन वी मीट टुडे एट सो एंड सो टाइम, तो वो अपनी सिस्टर को वो टेलीपैथिक मैसेज दिमाग से भेजते थे कि can we go to visit our mom together, he and his sister, because for whatever reasons maybe sister नहीं आ पाती होंगी या जो भी है, तो वो टेलीपैथिक मैसेज भेजते थे and it has always worked for him. So how cool is that, right? And then Dr. Phineas Quimby, of course, he is known to be a very good healer, the psychic healer. सो उनके बारे में वो उन्होंने ये बताया था दैट हमारा माइंड कहीं पे भी जा सकता है बिकॉज हम लोग ट्रांसेंडेंटल बीइंग्स हैं. So you can be here, but like if you really want to bless someone who's sitting in Italy, we can do that by being present there. And if you want to see that person's situation, figure that person is not well, lying down on the bed, we are capable of seeing it. Just that हमको अपने subconscious mind से पूछना पड़ेगा कि हमें देखना है वो कैसे हैं, क्या है, उनके बारे में हमें सब पता लग जाएगा. अच्छा, जो पिछला वाला वो था ना टॉपिक जो मैं आपको बता रही थी कि इन द मॉर्निंग से दैट आंसर और आई रिमेम्बर, ये तभी करना है अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा होगा. कई बार ड्रीम्स बहुत वैसी वाली, दे आर नॉट वेरी प्लेजेंट ऑल्सो. सो अगर वो वाली ड्रीम्स को आई रिमेम्बर कर रहे हो तो फिर देन यू आर इन अ सूप. ओके, सो ये आई रिमेम्बर तभी करना है जब आप कोई क्वेश्चन पूछ के सोए थे या आपने कोई चीज आपकी खो गई थी एंड यू वांटेड टू नो वेयर इट वाज केप्ट, आप वो पूछा था और आपको याद नहीं आ रहा है सुबह, तब बोल रहा है आई रिमेम्बर. ठीक है, बिना बात के नहीं कि हाँ रात में कोई सपना आया था आई रिमेम्बर. ऐसे इररेलेवेंट चीजें नहीं याद करनी होती है. सपने में वो सब भी कई बार आता है जो आपने बहुत ज्यादा देखा. सपोज यू बिन binging on some TV program or some web series, और उसमें बहुत ज्यादा लॉ सूट्स और वो सब चीजें हैं जहां लड़ाई झगड़ा होता है, जहां कोई पीछे से किसी को चीट करता है, वो सब चीजें भी ड्रीम्स में आती हैं. बिकॉज एनीथिंग दैट यू हैव पेड अटेंशन टू, दैट योर सबकॉन्शियस एब्जॉर्ब्स. इसीलिए हम कंटेंट कंजम्पशन की बातें करते हैं कि किस तरह का कंटेंट कंजम्पशन आप कर रहे हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एब्जॉर्ब हो रहा है और वो एम्पलीफाई होकर आपको दिखेगा. इफ यू वॉचिंग ऑल दैट सास बहू के क्रेजी सीरियल्स, यू हैव टू स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज आपके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे उसकी वजह से. ठीक है, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई भी इंफॉर्मेशन आउटसाइड से एब्जॉर्ब कर लेता है. इफ somebody has been very sick in your somewhere, like maybe आपने कोई टीवी पे देखा, न्यूज में देखा दैट सो एंड सो पर्सन, कोई सेलिब्रिटी है वो बहुत बीमार है, ये इमीडिएटली ब्लेस कर दो एंड स्विच ऑफ द चैनल, और आप स्विच ओवर टू द नेक्स्ट सम अदर प्रोग्राम. This is what, just bless and move on. Whenever you see anything, any content on television that you don't want to absorb into your life, immediately just bless that person, close your eyes, pray for the well-being, happiness, healing, etc., and switch, because otherwise you are going to absorb it into your life और आपको भी वो चीज नजर आने लग जाएगी अपनी अपनी निजी जिंदगी में. So we don't want that to happen, right? So be wary of the content consumption जो हम सब करते हैं कहीं से भी. न्यूज़पेपर से भी अगर हम ऐसी कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं जहाँ पे कोई ऐसी like चीज लिखी हुई है which is very traumatizing, है ना, मतलब कई न्यूज ऐसी होती है जो इतनी कैथार्टिक होती है. सो नहीं, उसको देख के यू थिंक अबाउट इट मोर एंड मोर कि ओ गॉड ये हो गया, क्या होगा उनका, ऐसे होगा. इमीडिएटली ब्लेस फॉर द परफेक्ट आउटकम फॉर ऑल ऑफ देम. जो ठीक चल रहे हैं वो बहुत अच्छे से, एवरीबडी इज अलाइव, हीलिंग, हेल्दी, सबकी वेलबींग, सबकी प्रोस्पेरिटी, सबका अबंडेंस, सबकी खुशियां, इससे ब्लेस कर दो एंड मूव ऑन एंड गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम. सो दिस इज हाउ वी हैव टू मूव ऑन ऑल्सो. सो ऐसी चीजें हम कोई नहीं याद करके आई रिमेम्बर करें जो रात में ड्रीम देखी थी बिकॉज वी वर बिंजिंग ऑन सम टेलीविजन शो. सो इसलिए आई रिमेम्बर इज ओनली व्हेन यू आस्क्ड अ क्वेश्चन और यू रेज्ड अ रिक्वेस्ट टू योर सबकॉन्शियस माइंड. Yeah, one sec, I'll just, yeah, point number 11. Point 11. A young college student claims regularly and systematically that the infinite intelligence of his subconscious mind
guides him in his studies, and reveals all the answers to him. Often, his subconscious responds prior to the examinations by revealing all the questions to him on a screen in his mind. He awakens and looks up all the answers to invariably find that the very questions appearing to him in a dream are identical with those on the examination, perhaps a week or 2 weeks later. This is called precognition, seeing an event before it happens. The questions were already in the mind. He simply tuned in and picked them up. The wisdom of the subconscious mind caused the professor to ask the same questions, thinking all the time that his conscious mind was making the decision and selecting the questions. This is why many professors do not know the cause of their actions. Indeed, the student often seems to be smarter than the teacher from a mental and spiritual standpoint. Yeah, so this is the last point from this particular chapter, जहाँ पे ये स्टूडेंट था, उसका एग्जाम्स होने वाले थे, तो वो बहुत नर्वस था. तो उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड से सोने के पहले ही asked that please reveal to me the questions and the answers that I need to kind of really learn and prepare well. And he got hunches. उसके दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए कि इस चैप्टर को पढ़ो, उसको पढ़ो, उसको पढ़ो. एंड देन ही केम टू नो सो दिस इज कॉल्ड प्रीकॉग्निशन. सो जब हम एनएलपी का कोर्स कर रहे थे तो हमने प्रीकॉग्निशन के बारे में पढ़ा था, और एग्जैक्टली ऐसे ही पढ़ा था कि आप कोई भी इवेंट, प्रीकॉग्निशन का मतलब होता है दैट रिकॉग्नाइजिंग द इवेंट बिफोर इट हैपेंस. जैसे सपोज अगर मुझे कहीं डिनर पे जाना है, मुझे वेडिंग अटेंड करनी है, तो मैं पहले से ही मतलब मुझे दिख जाएगा कि वहां पे मुझे ये फ्रेंड्स मिलने वाले हैं और इस तरह का खाना होगा, पहले ही पता लग जाएगा. जब आप 4 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहने लग जाते हो तो आपको एक्चुअली ऐसी चीजें पता लगने लग जाती है, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिवेट हो जाता है, जैसे हम सबका होगा ना. धीरे धीरे हम इतना ग्रेटिट्यूड करते हैं, हम इतना ज्यादा माइंडफुल रहते हैं, हम छोटी छोटी चीजों को रिकॉग्नाइज करके उनको थैंक यू बोलते हैं, हम साइलेंस एक्सपीरियंस करते हैं. साइलेंस doesn't always mean sitting at one place and doing it. Silence can be going for your walk alone and just recognizing the little things like the tree, noticing the flowers, the colors of the flowers, noticing कि अच्छा ये bud के form में है, seeing the color of the swings which are there maybe on your left or right, seeing the color of the building that you can see, feeling the breeze on your face, like those little things. रोड को देख रहे हो, ट्री को आप थैंक यू. That is a time which is very, very meditative, which is in silence, जहाँ पे दिमाग is not cluttered. It's not in the past and it's not in the future. It's totally in the present moment. उसको being in the present moment को बोलते हैं mindfulness. The mindfulness, except because the power is only in the now. There is no power in the past, and there's no power in the future. Future is something you're creating by your now. So the whole power lies in the now. इस moment अगर हम mindful हैं, हम देख रहे हैं स्क्रीन पे क्या है, हम आवाज सुन रहे हैं, अगर हम 10 चीजें और नहीं कर रहे, आज तो संडे का दिन है, आज हमको किसी को काम पे नहीं जाना है, तो हम एक जगह बैठ के क्या सुन रहे हैं कि अभी भी हम अपना बेड ठीक कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं. तब हमारा दिमाग 3-4 जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिकॉज बेड ठीक कर रहे हो तो आपको उसका भी कलर नजर आ रहा है, अपने क्विल्ट का, पिलो का, ये यहाँ रखना है, वो करना है. देन यू आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स एट द टाइम, सो यू विल नॉट बी माइंडफुल एवर. अगर हम बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग इज गुड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज एक बार में एक ही चीज, if you're sitting and talking to someone, just listen to that person, put your 100% attention on that person. If you want to take a call and disrupt that conversation, say excuse me and only take the call. Like do one thing at a time. That's also being mindful. तो जब हम इस तरह का हमारा बिहेवियर, तभी I want you to study that book The Silence, जो ऑडियो बुक के फॉर्म में है. आप अपने एयरपॉड्स लगा के, ईयरफोन्स लगा के सुन सकते हो, और सिर्फ 40 मिनट्स की किताब है. इट्स नॉट इवन दैट इट्स टू मच. तो उस बुक को आप अच्छे से सुनो, उसकी एक एक लाइन को समझो. एक बार पढ़ के दोबारा जब शाम को आप वॉक पे जाओगे या कोई ऐसा मोमेंट जब 40 मिनट्स आपको मिलेंगे, दोबारा से इसको सुनना. 3 बार सुनी तो थोड़ा थोड़ा समझ आ जाएगा कि साइलेंस की इंपॉर्टेंस और उसका मतलब क्या होता है.
ठीक है, and only then you will, your subconscious mind will be activated. Otherwise, if you are very noisy in your head and cluttered, your subconscious mind is never active. फिर आप अपने conscious mind को आपने active कर रखा है. Subconscious mind तभी active होता है जब conscious mind shutdown mode पे होता है, जब हम mindful होते हैं. सो इसीलिए उस किताब को आज अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल उसका एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस को डिकोड करके, बिकॉज वो प्री रिक्विजिट होती है इस किताब के, इस टेलीसाइकिक पावर को हमारे लाइफ में आने के लिए. सो इसीलिए उस किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है. और हम देखते हैं अगर साइलेंस हमारी हिंदी में भी अवेलेबल है तो फिर इट वुड बी ग्रेट, है ना. सो लेट्स जस्ट सी, ऑल्दो आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन उसका क्रक्स हमको जानना बहुत जरूरी है कि कैसे ये होता है. सो बाय दिस वी कंप्लीट दिस पर्टिकुलर चैप्टर. तो आज हम मेरे ख्याल से नेक्स्ट चैप्टर तो शुरू नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट्स ऑलरेडी 7 o'clock. And from tomorrow we'll start chapter number 5, how telepsychic reveals answers in dreams and visions. So it's not always in dream. आपको न्यूज़पेपर में कोई सेंटेंस नजर आएगा, कोई एड नजर आएगा जिसमें आपका आंसर छुपा हुआ है, ठीक है, तो ये भी आपको नजर आएगा. सो दिस इज व्हाट you know, like the other day I was driving on the DND flyway and I was just thinking about something in my head related to office. ऐसे दिमाग में कुछ चल रहा था. सो एकदम से वो बिल बोर्ड नजर आया, इसमें लिखा हुआ था स्टे इन योर लेन. दैट आप वही काम करो जैसे आप करते जा रहे हो, ठीक है. आपको, मैं यही सोच रही थी कि मैं वो करूं कि नहीं करूं, शुड आई डू इट, शुड आई नॉट डू इट. सो उसमें आया था स्टे इन योर लेन, दैट इज कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, यू डोंट नीड टू डू दैट. इस तरह के हंचेस आते हैं. एंड बिफोर दैट, थैंक यू मिस्टर साई प्रसाद राव फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली. यू हैव एन एक्सीलेंट डिक्शन, आई मस्ट से. थैंक यू सो मच. Thank you very much, Deepti. Thank you. I've not used the So word this is ma'am. what. Okay. Thank you. Thank you everyone for listening to me. Bye. Then, so I wanted to share with you about that experience yesterday. So a few days ago, I had lost my sunglasses from one of a very expensive brand. And so I was actually wondering, तो उस दिन मैंने बहुत ढूंढा, फिर मैंने I asked Kushal, my son, that have you seen my, like those sunglasses? Maybe मैंने कभी आके उतार दिए हो, maybe it is in the some drawer somewhere, अगर किसी को दिखे हो. तो he was like, no, I didn't. Then I asked Deepak that मेरे sunglasses कहीं पे मिले, like I really want them and all that, which was about a week ago. फिर मैंने सोचा that okay, like a human, सबसे पहले आप परेशान होते हो. So the telepsychic thing didn't come to my head that day. And then I thought that, okay, last when did I wear? So then I thought that, okay, I had worn them when I had gone to Goa with Poonam and Meena. Then I thought, let me ask them कि कहीं उनके सामान में गलती से चला गया. और हम लोग ऐसे exchange करते रहते हैं, तो पता नहीं मैंने दिया हो. फिर अगर उनके पास भी है, then at least I know it is there, like एक ही बात है, they use और me use. फिर देन आई फॉरगॉट अबाउट इट. मैंने बहुत ढूंढा उसको, बीच बीच में भी जितनी भी बार आई ओपन माय क्लोजेट्स एंड चेस्ट ड्रॉर्स, मैंने वहां देखा कि अगर कोई. सो आई हैव अ कलेक्शन ऑफ सनग्लासेस बिकॉज आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ देम, like shoes, bags, sunglasses. Typically I invest a lot of money in them. So I did not get, and then फिर अभी भी 2-3 बार बीच में ऐसा हुआ that each time I open my drawer, I'm actually looking for that, कि वो है कि नहीं है. And there are loads of sunglasses. I have the huge collection. You name a brand and I've got it. So वो सबको खोल के देख रही थी, बिकॉज कई बार ये होता है कि इफ द बॉक्स इज टू बिग, तो उसमें मैं 2 सनग्लासेस रख देती हूँ. सो देन आई थॉट दैट मे बी मैंने 2 रखे हो, मैंने खोल के अर्लियर चेक किया. Then yesterday morning, I thought that it was my chutti and I was very, very relaxed. And then I went to the gym and walk and everything, So finally 10:30, 11, I came back home after a long gym session. And then I asked my subconscious mind, please reveal to me, please take me to where's my sunglasses. Those sunglasses are, they were from Valentino. So I especially said that, please take me to my Valentino sunglasses wherever they are, and I want them right now. And you will not believe that in my stack of t-shirts in my cupboard, between, so there are 3 stack of t-shirts that I have. Between them was a black this thing, and it was popping out of that area. I don't know why I kept them there, because it was not a place I ever would keep my sunglasses. And the moment I opened my cupboard, it did not take even 5 minutes.
I opened my cupboard and I saw a black box there, and I opened it and it had those sunglasses. So I was feeling so happy about it. Like these little achievements. Then there was an outfit I had given for alteration, a beautiful one of my favorite outfits. It needed an alteration because I've lost some weight and I wanted it to be tightened and made it my size. And so I gave it to the Master Ji here close by, who runs a boutique. And वो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है by evening he'll give it to me, and I thought that I'm going to wear it on Sunday, which is today. So just wanted to do that because it's a beautiful weather in Delhi now, hot, sunny, nice, breezy, like bright that way. So I thought that I'll wear that dress on Sunday because Sundays generally is a day when we go out with family and we have a lot of fun. So I went there in the evening at around 8:45. He had not done it. And I thought, just turned on that request to subconscious mind, that little things. So I said that I really want to wear it, but thank you. Then I blessed that Master Ji so much because he was so loaded with work. मैं जब गई थी तब भी उनके यहाँ 3 लोग खड़े हुए थे. तो फिर उसके बाद में घर वापस आ गई. You will not believe in the history of my staying here where I do right now. This guy came home at 9:40 or so and delivered that dress to me. Can you believe it? I mean, I did not expect him because मेरे conscious mind को ये पता ही नहीं था कि कभी भी मास्टर जी खुद मेरे घर पे आके दे सकते हैं. उन्होंने इन अ पासे मुझसे ये पूछा था मॉर्निंग में जब मैंने डिलीवर किया था उनको. उन्होंने मुझसे ये पूछा था दैट व्हाट्स योर एड्रेस, बिकॉज ही इज राइट ऑपोजिट टू माय apartments. Yeah, I mean, we are in a huge complex. So this is actually one of Asia's biggest housing society. So where I live, and right opposite is his, like a little towards the left side is his, where he runs his store. एंड आई नेवर न्यू दैट. ऑफकोर्स मैंने कभी भी उनको पहले दिए हैं ऐसे, बट ऐसे कौन एड्रेस पूछ के, उन्होंने कोई लिखा तो नहीं था ना. ही हैड आस्क्ड मी कि आप कौन से घर में रहते हो, तो मैंने उनको अपना एड्रेस बता दिया था. मुझे नहीं पता था उन्होंने लिखा. आई मीन ही इज वन पर्सन हु इज सो क्राउडेड बाय पीपल ऑल द टाइम, उनके पास हमेशा काम रहता है. And imagine at 9:40 he came and delivered that dress, and I was actually wondering कि रात में कौन आया है, like I was already in bed that time. And he came to deliver that dress to me. Can you believe it? It was just a little request that I'd asked my subconscious mind that I'm going to wear that outfit today. And it was just that. So this is how telepsychic is used in our everyday life. I was so amazed at both the experiences I had yesterday. सुबह तो मैंने specially पूछा था that, please take me to wherever my sunglasses are. And this is how it got revealed to me. So let's use this for bigger things also in life. But these little things, फिर रात में जब मैं मैजिक रॉक कर रही थी तो मैंने ये दोनों incidences को बहुत अच्छे से, but still I did not put them as the best out of the day. That was something else. But yeah, I mean, these are little things that I really acknowledge from the bottom of my heart, and I actually join my hands to say thank you to the universe for revealing where my sunglasses were. And I apologize for all the parishani I had because of that, क्योंकि मेरा thinking brain बहुत overshadow कर रहा था मेरे subconscious mind को all these days जब मुझे नहीं मिल रहा था. Because again and again I asked Bharti, I asked Maya, so these are my staff who work in the house. So, they were also like, नहीं देखा तो था अभी याद नहीं है ये वो, and I really wanted it. So yeah, I mean, this is how we can actually use the telepsychic power to reveal to us anything that we want to know. We can even use this telepsychic power to take us to the doctor who can totally cure the illness, right? जो हमने कल पढ़ा था कि you can ask the subconscious mind to reveal to you that which doctor is going to heal this particular situation or whatever medical condition. इस तरह की चीजें, where should you go for vacation? Even this will be revealed to you. How to get the money to go for the vacation. Even this can be revealed to us by the telepsychic power. How to, take your business and escalate it. What are the best, which is the best way to escalate the business? Use the telepsychic power to get your answers done. And more you use it, more and more you start loving and enjoying it. And you gain back that power that you always had
At times we lose that power because thinking brain takes over, conscious mind that is. So conscious mind takes over. Conscious mind सिर्फ 5 सेंसेस से परसीव करता है, उसका बस उतना ही बस का होता है ना. So conscious mind is the thinking brain, thinking too much, mostly worry, fear, anxiety, है ना. But the subconscious mind knows all and sees all, जो इसमें लिखा हुआ है, knows all and sees all. पहली चीज ये आज डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखी हुई है. दूसरी चीज जो उन्होंने लिखी हुई है, turn the request to the subconscious mind, the infinite intelligence, with faith and confidence. The second thing. So these two are the catchphrases from today's learning. Okay, first is that knows all and sees all. So there's nothing that the subconscious mind doesn't know about your past, present, and your future life, firstly. And secondly, turn the request with full confidence and faith. So if you doubt, you will not get the answer. So that's also very important, right? And the third thing I'm telling you, the answers get revealed when you are in the silence. Okay, in a cluttered situation, the answers will never, you will not get intuitions. You will not get those hunches or whatever when you are thinking too much. Okay, so this is what it is about us. So that's all for the session today. And Happy Family wants to share something with us. Happy Family, would you like to share your name, please? नमस्ते मैम, मैं वर्षा तलवार बात कर रही हूँ अहमदनगर से, शिरडी के पास. Oh, जी wow. Great. हाँ जी. जब से हम आपसे जुड़े हैं तो जैसे 5 एलिमेंट्स, ये मदर नेचर, इसके साथ कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया है. और इसमें रहने से जैसे आप बोलते हो पत्थरों को भी थैंक यू बोलना चाहिए. तो जो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमने बहुत इस पे काम भी किया है, तो उसके इतने अमेजिंग रिजल्ट है, इतने अमेजिंग रिजल्ट है. जैसे आपने एक बार बोला था कि इस पत्थर को भी अगर हम थैंक यू बोलते तो हमारे महिलाओं जैसे घर खड़े रह जाते हैं. तो ये बात मुझे Hmm. बहुत बोले तो जब से पत्थरों का, इन पेड़ों का, इन 5 एलिमेंट्स का, इस डियर मदर नेचर का इतना कनेक्ट हो गया है, तो इससे एक लाइफ यू टर्न हो गई है मैम. और हर टाइम जैसे आप बोलते हो ना कि गुनगुनाते रहना, तो 2 लाइन बोलना चाहूंगी. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना. चलते बसते गुनगुनाते रहना, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना. थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ मैम. थैंक यू. Thank you so much, Varsha ji. May God bless you with so much abundance, prosperity, happiness, excellent health, everything. This is so amazing. आप lyricist भी बन गए हैं, देखिए. Hidden talents सारे ऊपर आते हैं, है ना? So wonderful. Enjoy your life. And I'm so glad आप बहुत अच्छे से सेवर करके यूज कर रहे हैं मैजिकल पावर्स को. Thank you so much. Thank you. सो श्याम जी तो है नहीं संडे सिंगिंग के लिए तो इसीलिए आज वर्षा जी ने गा दिया हमारे लिए. यस बिट्टी जी. मैम आई वांट टू शेयर, मेरी सिस्टर का है एक्सपीरियंस. वो यूट्यूब पे आपको सुनती है लगातार. उसने कल मुझे रात को फोन किया और मुझे कह रही थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे एक दिन कॉल किया, पिछले वीक की बात है. उसके बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं तो बोली मैं बता नहीं सकी. वो सुबह, उसके बच्चे छोटे हैं, उसकी बेटी 10th में है तो थोड़ा एग्जाम्स का है. छोटा बेटा उसका बहुत छोटा है, मतलब 2nd क्लास, तो सुबह का सेशन नहीं लगा पाती. कहती है कि मैंने एक बारी, मेरे हस्बैंड ने कॉल किया कि मुझे थोड़ा ठंड लग रही है तो आप मुझे, वो होटल पे उन्होंने लीज पे लिया हुआ, होटल पे का काम करते हैं, तो आप जैकेट भेज दो. कहती कि मैं कैसे भेजूं, रात भी हो गई है, बच्चों को छोड़ के नहीं आ सकती. तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप रैपिडो से भेज दो. उन्होंने बुक किया और उसके हाथ उसको भेज दिया. बहुत देर हो गई और उसको मैसेज भी आ गया कि वो डिलीवर हो गया है. उसने अपने हस्बैंड को कॉल किया तो बोलते कि मुझे तो कुछ डिलीवर नहीं हुआ. बस उसी समय उसके पीछे से मदर इन लॉ ने भी मतलब बोलना शुरू कर दिया, मुझे तो पहले ही लग रहा था, ये हो गया, तुमने क्यों किया, तुमने क्यों भेजा.
कहती मम्मा प्लीज ऐसे नहीं नेगेटिव होके बात करते आप, कोई बात नहीं मैं देखती हूँ। उसने कॉल किया, तो उस बंदे का नंबर तो आया था, लेकिन जब कॉल करती थी तो वो कॉल सेंटर पे कॉल जाता था, उस पर्सन को नहीं जा रहा था। तो कहती कि मैंने बस मन में ठान लिया कि ये मतलब ये तो जैकेट चाहिए ही चाहिए। और कहती मैंने थैंक यू लिखना शुरू कर दिया, लगातार मैं लिखती जा रही थी थैंक यू। कहती सारी कंपनी को, उस पर्सन का नाम भी आ गया था, तो मैं थैंक यू मनीष भैया, थैंक यू मनीष भैया करके लिखती जा रही थी। तो उसके बाद वो कहती कि फिर हस्बैंड भी रात को आए तो बोलते यार मैंने ही तुझे एडवाइस किया था, पर मुझे भी लग रहा है कि नहीं मंगानी चाहिए थी। कहती नहीं आप मुझे थोड़ा टाइम दो। वो करती रही, कहती मैं उस दिन पूरा किया, रात को सुबह भी सारा दिन करती रही, सारा दिन ब्लस करती रही सब। फिर मैंने कहती कि मुझे समझ ना आया कि मैं किसको कॉल करूं। कॉल अच्छा, फिर अब वो कॉल जानी भी बंद हो गई। देन उसने फिर कहीं हेल्प में जाके किया, तो वो बोट जो एआई होता है उसमें उसने टाइप करना शुरू कर दिया कि एनी कंप्लेन के बारे में। तो उन्होंने फिर उनका कॉल आ गया कि हाँ आपकी कॉल आ रही है, हम देख रहे हैं, तो आप हम आपको उसका पर्सनल नंबर दे देते हैं, आप उनसे बात कर लो, अगर आपका काम हो जाता है ठीक है, नहीं तो हम एक्शन लेंगे। फिर उसने उसको कॉल किया, तो वो बोलता है कि मैम मुझे तो होटल मिला ही नहीं, मैं तो इस गार्डन, वहां पे कोई गार्डन है, मेघदूत गार्डन है, कहते कि वहां पे खड़ा हूं मैं, खड़ा था बहुत देर तक, मैं चारों तरफ देखा, मुझे तो वो होटल बेसिकली टेरेस फ्लोर उनका वो है, रूफ टॉप पे है, तो उसको नीचे नहीं दिखा, उसने बिल्डिंग की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। एंड और कहता है कि मैम वो जैकेट तो मेरे पास अभी भी है, मैं तो खुद चाहता हूँ डिलीवर करना, मैंने सोचा था कि मैं आपको वापस दे आऊं, पर रात बहुत हो गई थी, मुझे जल्दी घर जाना था। कहती कोई बात नहीं आप घर पे दे जाओ। और वो दे गया। कहती उसके बाद भी मैं उसको, कहती अच्छा मैंने उसको फोन पे भी गुस्सा नहीं किया कि कोई रिएक्ट करके बात नहीं की कि तुमने क्या कर दिया ये है वो। कहती मैं बिल्कुल शांत रही, मैंने उसको बोला कि भैया मुझे लग ही रहा था आप कहीं खो गए होगे, तभी आपको नहीं मिली। मतलब उसने कुछ अलग तरह से बहुत प्यार से बात की, और मतलब वही बोल रही थी कि मैं बिल्कुल मैंने टेम्पर लूज नहीं किया, मेरे आसपास के लोग भी मुझे इतना कुछ बोल रहे थे तो भी मैं शांत रही। एंड टोटली थैंक यू ब्लेसिंग्स। और उसके बाद उसको जैकेट मिल गई। कहती मुझे पता था एक दिन में मिल जाएगी, और वो एक दिन में मिल गई। तो उसने मुझे शेयर किया, मैंने कहा तुम आना ग्रुप में शेयर करना, पर वो फिर नहीं आई आज। मैंने उसको बोला था हाँ आज नहीं नहीं, इट आपको। विल बी ग्रेट टू हैव हर, प्लीज कन्वे टू हर। क्या नाम है उनका? जी उनका नाम है हरप्रीत अरोड़ा। शी इज फ्रॉम अच्छा इंदौर। मैंने शायद अच्छा। भारती जी को एक बार उनके बारे में बताया भी था। तो वो भी ओह बहुत, ग्रेट। वो उसके भी बच्चे, मतलब उसको बच्चों को भी मैंने कहा है ज्वाइन कर, उसके बच्चे बहुत फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं पिछले 10 ईयर्स से कर रही हूँ। तो वही है, हम दोनों बहनों का आपस में बहुत है, मैं उससे हर बात शेयर करती हूँ। वो इतनी इन्फ्लुएंस्ड है कि वो खुद इतनी बुक्स पढ़ती है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ गेटिंग रिच वाली उसने अभी पढ़ी। और मतलब उसको बहुत ही चीजें ये सब, मतलब बहुत ही बच्चे भी बहुत इंस्पायर। उसकी छोटी सी बेटी 10th की है, और इतना ग्रेटिट्यूड करती है। उसका बेटा 2nd क्लास में, वो भी इतना, मैं उसको कई बार बोलती हूँ तुम बच्चों तुम आओ प्लीज आओ, और आके अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करो। बहुत ग्रेटिट्यूड करते हैं बच्चे भी। हाँ वो बच्चों वाले मदर, सेशन को अटेंड कर सकते हैं जो 7:15 से होता है शाम को। जी वो जी, स्कूल वो गोइंग बहुत बच्चों का वो ही है। बहुत फैमिली बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। मतलब वो भी, मतलब मेरे से मेरे को बोल गया मासी आपके करके। मैंने कहा नहीं, तुम लोगों के शायद लाइफ में ये सब कुछ लिखा था, हम लोगों ने ऐसे ही मिलना था। और बाकी आपका जो स्पेक्स वाला जो मैम, बहुत अच्छा लगा। बेसिकली मेरे साथ ऐसा बहुत होता है कि हाँ, घर में कई बार चीज गुम जाती है, तो मैं भी ऐसे आराम से बैठ के बोलती हूँ। मतलब मैं उसको टेलीसाइकिक नहीं समझती थी, मैं ये सोचती थी, मैं अपने उसको सारे ना सीक्वेंस को मिलाती थी कि मैंने क्या 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 किया, और वो चीज मुझे मिल जाती है। तो मेरे घर में मैं बहुत फेमस हूँ कि घर में किसी को कुछ नहीं मिल रहा, मिट्टी को बोल दो मिल जाएगा। तो मैं सीधे वही अलमारी खोलूंगी, वो जाके वही पलंग पे से, मतलब कोई चाबी नहीं मिल रही, मैं वही वाला पिल्लो उठाती हूँ या कोई उठाती हूँ, और वो चीज मिल जाती है। तो मैं कई बार, वो मेरे को लगता है शायद मैं सीक्वेंस मिलाती थी कि मैं यहाँ 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 गई और वो मिल गया। पर कई बार ही बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू चीजें मिल जाती। तो मतलब ये भी मैंने आपसे अपने को थोड़ा सा किया। मैंने कहा यार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जाके वही चीज खोलती हूँ और वो सामने पड़ी होती है। एक बार मेरे मदर इन लॉ पढ़ रहे थे रजनीश की ओशो की, जपजी साहब की, गुरु ग्रंथ साहब हमारे पास है ट्रांसलेशन। वो इतनी परेशान हो गई, मैं पढ़ रही थी, मैं रोज पढ़ती थी, मतलब वो लिटरली, मतलब ना, शी इज इन टीयर्स की मम्मा मिल नहीं रही, मम्मा मिल नहीं रही। तो मैंने भी उनको पढ़ते देखा, उन्होंने लिटरली मतलब अरदास की, प्रसाद भी मान लिया कि नहीं मेरे को तो ये चाहिए ही चाहिए। मैंने कहा मम्मी ऐसे थोड़ी होता है, आप हर चीज के लिए प्रसाद मानने लग जाते हो।
कहते पता नहीं, मैं हुने ਇੱਥੇ रख के गई सी, मैं हुने ਇੱਥੇ रख के गई सी। मैं पता नहीं क्यों गई, जाके अलमारी खोली तो जहाँ मतलब हम लोग गुटके और वो संचे साहब है हमारे घर में, तो वो पड़ी थी उसके बिल्कुल साइड में पड़ी हुई थी। फिर मैं तो अलमारी खोल ही नहीं, मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने जाके खोली और वो सामने पड़ी हुई थी। तो ऐसा मेरे साथ भी मैम कई बार होता है। थैंक यू सो That मच। means you are in alignment. आज आपने बताया कि हम इसको और ज्यादा मेडिटेट करके और भी अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सो नाइस। Thank you so much, and God bless Harpreet also from Indore. We would love जी। it if she comes and shares. And बच्चों को वो शाम वाला सेशन अटेंड करा सकते हैं। उसमें जी, जी। लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है, उसमें टेलीसाइकिक नहीं पढ़ते हम, उसमें हम मैजिक नहीं बुक नहीं, पर पढ़ते हैं। बच्चों के लिए मैजिक ही काफी है। हाँ भाई। तो वो Thank you. इसीलिए हम बच्चों के लिए मैजिक बुक भी पढ़ते हैं, और बच्चों की जिंदगी में जिस तरह से मैजिक हो रहे हैं ना, उनके एक्सपीरियंसेस इतने अमेजिंग होते हैं, दे आर सो इंटरैक्टिव, यू नो, एंड दे फॉलो वट एवर इज टोल्ड टू द टी, एंड देन उनके छोटे छोटे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो एक्चुअली बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, यू नो, दे फील कि वो बहुत छोटे से, इट्स रियली अमेजिंग, यू नो, इन दैट सेशन. So great. And Harpreet ji, continue listening to us on the YouTube, and thank you for being consistent. Thank you so much, Bitti ji. Thank you. You are a power source for so many people. I love ये जो आप कट करके ट्यूब, यू नो, यूट्यूब के जो वीडियोस को आप कट करके कुछ एनेक्डोट्स जो पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप मैम उसको निकाल। मेरे को तो इतना अच्छा, मैम मैं ये भी बात बोलना चाहूंगी कि जैसे आज भी आपने, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऑब्जर्व भी कर रही हूँ, अब मैं थोड़ी सी और अलर्ट हो गई हूँ। अभी आपने लास्ट में बोला कि ये 3 पॉइंट्स हमने टेलीसाइकिल चीजें, मैंने अभी ऑब्जर्व कर लिया कि ये चीज अब चाहिए। तो आप कई बार कंटिन्यूटी में जब 1 मिनट पे कोई बहुत सारी अफर्मेशन बोलते तो मेरा मन खुश हो जाता है कि यार आज तो और मुझे, मेरे को मटेरियल मिल गया, मुझे लिखना नहीं, भी आप है कर दिया और करो, हम उसको यूट्यूब पे रिपोस्ट कर देंगे, हाँ। एक्सट्रैक्ट करके ना। नहीं कभी मैम, कभी वो किसी के एक्सट्रैक्ट पास सिर्फ 4 मिनट होते हैं और उनको एक अपलिफ्टमेंट चाहिए होती है, तो वो सिर्फ 4 मिनट के वीडियो जो है हम उसको पोस्ट कर देंगे। नहीं मैम, वो वैसे भी उसका उस पे लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी देखेगा, एक तो उनको वो पूरा वीडियो उसी समय मिल जाएगा, वो उसके आगे पीछे का देख सकता है, क्योंकि उसी समय उसको वो नोटिफिकेशन भी आएगी, इफ यू वांट टू फुल वीडियो तो वो नीचे आ जाती है। और उसके अलावा मतलब वो उसका जो व्यू है वो आपको ही मिलेगा, क्योंकि मैंने देखा वो आपका जो 5, जिसकी हमने 5 अफर्मेशन आपने अपने हस्बैंड के लिए की थी, तो उसके बहुत सारे व्यूज हो गए, मैं कल देख रही थी, क्योंकि मेरे पास उसका ओके, मतलब मेरे पास बैकअप उसका है, किसी को भी चाहिए हो, क्योंकि मेरे को दिखाता है योर क्लिप्स, तो मेरे क्लिप्स में देखती हूँ, पर उसमें लिखा हुआ है कि वो उसकी जो व्यूज है वो आपको ही मिलेंगे, मतलब मुझे अच्छा, नहीं। great. हाँ। Thank you so much for extending that support to us, which is so useful to so many. That's the whole idea, कि लोगों को अगर रिलेशनशिप के बारे में सुनना है तो कुछ 5 मिनट का वीडियो ऐसा हो जो सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में एक्सट्रैक्टेड हो, जो सेशन चल रहा है उसमें से. So yeah, thank you for doing that for us. You're benefiting a lot of people like that. Thank you so much. Yeah, thank you. Yes, थैंक यू। Soumya. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Hello. Ma'am, this is sharing with respect to telepsychics. So yesterday probably was my lowest point since I've joined this journey, because I had identified with my mind so much throughout the day in the workplace that I had dipped very low, and nothing I was doing was not working for me. Like literally, it was not working for me. I was doing. I had to lean on a friend to uplift me a little. So we were conversing. I was talking. I was not venting out per se. I was just trying to say, I identify this problem and I want a solution. I want to, I want to solve these things, like that. And that person on the other side, my friend, wanted to be so badly be with me in that moment to, reassure me and everything. So I was walking home and I was on call. And my energy was also like, universe, as soon as I stepped out from the work field, I was better. I started doing magic dust and all that, but still the energy was not shifting so easily that it used to. I was just telling universe, universe, show me that you're with me right now. Like I want you to tell me that you're there with me and all that. And my friend also was in the state ki he wants to be with me right now, right? So I'm walking, and suddenly a black dog, a stray dog, comes to me, sniffling, right? It came near me. Usually
before this series, I mean this change, I was not a pet person. I used to like go far away as soon as the dog used to come or a cat used to come. I'm like, no, because it was taught in home not to, pat or anything because they are stray and they carry germs. And also I was scared of them. So, but now I bless the dogs more than I do humans, to be honest. When I'm doing magic dust, when I'm walking in the street, every day I'm at least saying have good food, eat healthy food, because I'm seeing you guys get obese eating our food. Get good food, be healthy, always get food, be full is what I bless them with. So, जब but whenever I used to bless क्या them, कह I रहे used to थे feel they'll wake up and come towards me. But that never happened whenever I was blessing them. But yesterday, I was just random. I'm walking towards home, and then this black dog comes to me, as if it just came and it stood in. I'm walking. I'm not even sitting. Usually they come and you sit, right? But no, it came when I was walking, and it stood with me, and it stood with me saying it's okay, and I just patted its head and all, and I had literal tears in my eyes. I was crying, and I was like, thank you universe for this beautiful sign. And I thanked my friend. I said, you're literally here right now in this dog form, because that person actually identified it was a black dog through to me. So I just told the person that you are here with me because it's a black dog. And he's like, yeah, why the black? Why couldn't it be golden or white, So that's what I also resonated with telepsychics yesterday in a very profound way. And then no sooner that interaction happened, I was back to being myself. I was back to being this light and jovial person. And I had a great evening. We went out and I had a great time. So yeah, I just wanted to support your sharing with this and say to everybody that it really works like magic. Thank you so much, Thank you ma'am. so Thank much. you. Yeah. So you only asked for that universe, show me that you're there with me, and then you got it. Yes. Anything from nature comes to you. Sometimes it is a leaf that falls. With me, it happens that when I'm walking outside early in the morning and I ask a question and then I see a leaf falling right in front of me or on my head and it comes on my body, from a tree. So Yeah. whichever way, your whatever get answered, anything that you've asked, anything that you're seeking. So it means that, look, I'm there and you don't need to worry about anything. Everything is going to turn out for the best. But start also writing that affirmation that everything always works out for me. So it's quite Definitely. powerful, and yeah, and then it gets wired in the subconscious that everything is always working out for me. Everything is always working out for me. So what you can also do is Abraham Hicks video. So when you actually type Abraham Hicks on the YouTube, and everything is always working out for me. So it's a 15-minute rampage, because according to Abraham Hicks, when anything you do for 15 minutes or more, that starts turning and shifting things around in your life. So it's a rampage of 7 to 15 minutes के अलग-अलग videos are there on the YouTube by Abraham Hicks. It's Abraham Hicks. Everything is always working out for me. बस यही रिपीट करते हैं वो उनकी आवाज में. एस्टर हिक्स अपनी आवाज में बस यही रिपीट करती है उसमें 7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए. Everything is always working out for me. And that is what you can listen when you are empty-headed, or when you don't have too many things, or when you're commuting, or when you're just sitting, or you're doing some work. आप ये YouTube पे लगा के छोड़ दो, because you're constantly listening to it. So this will penetrate the subconscious mind. Yeah. Most Anybody can put a definitely, video ma'am. on the group Just also, both on Telegram and here. just wanted to thank you because I had started reading the telephysics book when you posted that day. And when I Psychic. started reading it, there were a lot of question marks. If I had read it just because you said me to read, I would not be able to grasp it at the intensity that you give it, because, ma'am, you explain it so beautifully, decoding each word, each sentences, each phrase, and you throw that beautiful light on them that makes it more imbibing in ourselves. Like, I feel I can resonate with the word because you make it so nimble, so easy to digest. So thank you, ma'am, so much for being there for us always and every day without fail. Thank you so much for holding our hands.
Thank you. Thank you. So it is the universe doing it. Just before the session, I always close my eyes and I pray that thank you, universe, for your powers to flow through me and to me. So then it is, I'm just a medium, I'm just a channel. Yeah, But that's thank you very true, so ma'am. much to You really all of you and decoded to so you, well for Swami. us. Thank you. Thank you so much. And let's call it a day. And we are missing Shyamji's song, ending with Shyamji's song every day. So whenever he's there, Shivani is not around, ma'am. So I would have sung a song for her. ठीक है, वो YouTube पे सुन लेगी. So शिवानी के लिए song. हाँ हाँ, अरे हाँ, शिवानी, birthday girl. I hope she's still शिवानी there. is not Otherwise, around. हाँ, She वो might have. YouTube पे सुनेगी. Yeah. So चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं. ताजा ताजा कली खिली है. हम उसके दीवाने हैं. हम्म. ला 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 ला. La 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 la. We love you, Shivani. So happy birthday to Yeah, I love you, Shivani, and wish you a very, very happy birthday. Enjoy. अभी सिंगापुर में actually बहुत time हो जाता है ना. I think about 9:30, 10 or something. It's 2.5 hours ahead of us. So I think yes, ma'am. on Sunday shows, please. It's a birthday, so yeah. Thank you. Thank you so much. Enjoy a beautiful Sunday. Thank Okay. you, Thank you so ma'am. much, ma'am. Thank Ma'am, you. thank Have a you. great day, ma'am. Bye-bye. Thank you, Bye. Dipti. Have a Bye. magical, Bye, beautiful day. Dipti. And bye to Bye, everyone ma'am. on the Thank YouTube. you, Today ma'am. was our Thank first you. live